हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आप सब लोग कैसे हो? आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओके, ग्रेट। सो सबसे पहले आई थिंक विशिंग यू ऑल हैप्पी दिवाली एंड आप सब लोग का नया साल बहुत अच्छा रहे एंड विश यू अ ग्रेट टाइम अहेड। सो कैसा रहा, मतलब लास्ट दिवाली से ये दिवाली, हाउज योर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग ईयर? सो आप सब लोगों से मैं पूछने कि कैसा रहा आप लोगों का ये साल। सो प्लीज आई थिंक आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू टाइप कि आपका ये साल कैसा रहा है अभी। आई विश और आई होप आपका अच्छा ही हुआ होगा लास्ट 1 ईयर में। सो शेयर योर। ओके, इट्स फैबुलस सबरी सर। व्हाट अबाउट अदर्स? सो फार गुड। ओके, एवरेज। ओके, excellent. Okay, great, good so far. Okay, great. So I think everybody has a good time. Okay, poor. Okay, Hari Gupta. So I think Hari, you should look into it and what are the challenges you are facing? Please type down in the comment box. So maybe if I can take it today, so I will try to cover it up. Okay, average. Okay, lots of learning. Super good year. Okay, okay. So how many of you are doing swing trading or few days to few week वाला trading? कितने लोग करते हैं? Super good year. Okay, okay. Me. Okay. Yeah. So आज का जो सेशन है अपना, will this Diwali can be a turning point for your investment? So basically, we will focus on the fundamentals of how you can become successful investor or successful trader, right? We will try to go to the basics on the first side, right? And then we will go into deeper side if time permits. Yeah. So सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग में नया कुछ होता नहीं। So if you study traders, those who have succeeded 100 years before, if you study traders who are successful now, the common characteristic is same. If you said study the investor, those who are successful 100 years before, if you study the investor who are successful now, the characteristics are mostly same, right? So there is nothing ये market में जैसा कि कुछ नया होता है, right? So let's try to learn and relearn and again learn and relearn, right? How many people agree with me that trading and investing is all about improving the same area of work every time rather than doing new thing every time? How many people agree with this sort of investing and trading, right? How many people agree that trading and investing, there is nothing called new? Rather than learning the same principles again and again and making sure that we implement that principles in our investing and trading very efficiently, that's the journey, right? Because knowing the principles, knowing the rules, knowing the framework is the one thing, and implementing that rules, framework, and embracing that is a different thing, right? So when you can connect one area, like you identified the one framework or one way of working, right? And implementing, that's the journey that every trader and investor go through, right? So what works for you, that is unique to you, right? It is not that what works for you, maybe it will work for others, right? But the principles will work for everybody. So maybe you can tweak, maybe you can have creativity around your setups, like, where you buy, where you sell, right? But the framework
The broad things is always same, right? How many people agree with it? That you can have a tactics around where you buy, where you sell, maybe you identify some creativity around your entries and all things, right? But the basic framework, everybody makes the money when there is a trend, right? If you are an investor, if you are a trader, right? So basically, you need a trend, whether it's upside, whether it's a downside. Otherwise, it's difficult to make money. If you are option seller, if you are a delta neutral, that's a different story. But I'm talking about if you are a trader or investor, you need a trend. What investor look? Investor look trend in earnings, but ultimately they benefited by the price hike, right? When price rise, investor made money. Traders also, when they make money, when the price goes higher or when the price goes lower, right? They make money. So the point what I'm trying to say is the basics, whether you are an investor, whether you are a trader, the basics is same. Everybody will make money when the asset price rise. If you are an investor, if you're a trader, you can make money when the asset rise also and when the asset goes down also, right? So the point what I'm trying to say is we need to look at the trends if we want to make money. The first principle is, let me highlight, is when you will make money, what you need? You need trend. The first thing as an investor and trader, if you want to make money, is a trend. How many people agree with me? Then what kind of trends, right? So let me define you the trends that what I understand that. One is the industries trend, right? Industry, like वो industries का ही एक rising trend आया है. जैसे example, we can say solar, we can say power, we can say capital goods, we can say electric cables and companies, right? We can say transformers. There is a huge trend across the globe that everybody want transformer, everybody want solar, everybody want green energy, everybody want uh, fast fashion, like like what Zudio is doing, right? So आप देख सकते हो जुडियो की सक्सेस के बाद now Reliance is entering, Aditya Birla is entering, V-Mart is entering, V2 Retail has entered, now CRM is entering, right? So what is that? That is a trend. कि one person is started, then when people see the success, कि ये धंधा बहुत अच्छा है, then everybody try to do that business, right? So what is that? That is a trend. Then some consumer behavior change, right? So after COVID, what was a trend? People want to travel. So there was a new trend that everybody want to travel. So what happened when everybody want to travel? Hotel industry's occupancy has gone so much higher, right? You see Indian hotel stock become 7x. Many hotel stocks become 3x, 5x, 10x, right? So why it has happened? Because there was a trend of traveling. People want to travel. Then you can see that AI. AI is a big trend, right? Now everybody want to have AI in their business or AI in their application or AI in their technology, right? Whether it's a Google, Facebook, Meta, Facebook and Meta is same, right? Then you can say Apple. Every product now they want that this product is AI enabled, this product has AI features, Samsung and whatever, right? So what is that? That is a trend. So why I'm trying to emphasize on the trend, because you need to catch trend to make big money in investing or trading. How many people agree with me? What you need? So सबसे पहले चीज एक चीज डिसाइड कर लो, whether it's a price trend, whether it's a industries trend, whether it's a business trend, whether it's a people's trend, right? What people try and tend to do it more, right? So let's try to figure out. आज के सेशन में हम सब पहले फिगर आउट करने की कोशिश करते विच आर द
dominant trend around us right now. So let's dive. मैं चाहता हूँ हम सब लोग क्राउड सोर्सिंग करते हैं आज ट्रेंड को. सो मे बी मेरे ध्यान में भी ना हो और आप लोगों ने कोई नया ट्रेंड कैचअप किया हो, राइट? एंड दैट इज अ डोमिनेंट ट्रेंड एंड दैट ट्रेंड इज चेंजिंग वेरी फास्ट. So let's try to type in the comment box which are the trend you are seeing, right? As of now around you. And that has the potential to become bigger and bigger. So let's start. Next 2 minutes, we will focus on the trends. जो आप लोगों को समझ में आ रहा है वो आप लिखिए. Yeah. Okay. Let me type data center. Okay. Energy transition. Okay. Till energy transition में green energy आ गया, but let me define it again. Green energy. Okay. चलो AC लिखते हैं. And insurance. Okay. Then semiconductor. Okay. Okay, let me define it more. Wealth management. Financialization. Okay. Electrification. Okay. I think electrification you can go deeper, power generation, transmission. Chalo, water management. Electric vehicle. Okay. AI. Okay. इसको साथ में कर देते रिसाइकलिंग. AMCs आ गया वेल्थ मैनेजमेंट में. इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके. Okay, next. Okay, somebody is typing CDMO. Okay. Stock broking. Defense. Somebody pointed right. जिसको बोलते हैं फास्ट कॉमर्स. स्विगी, जोमेटो पे, ब्लिंकिट.
Waste management, okay. Waste management, life cycle, okay. Power sector, okay. Solar. I think energy transition go you can define in deeper solar, wind, and all. Diagnostic, okay. Bronze, home decor, okay. Packaging, okay. Hospital, okay. Okay. Okay, I think good point. Shaikh, ready-made, prefabricated buildings. Okay. Okay. AI infrastructure. Okay, great. So, how many got lot of ideas? See, by just spending 2 minutes, how many ideas you got? How many trends you got around you? So, आपको क्या लगता है ये प्रैक्टिस does it will help you to find the stocks when you focus on next year? क्या ये जो हमने प्रैक्टिस किया ये प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगा आगे क्या? Okay. So which are the dominant trend as of now, right? Let me put जो मुझे लग रहा है अभी एक जो अभी डोमिनेंट ट्रेंड है दैट इज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाउ एआई इज अ बज़वर्ड जो सब लोगों ने बहुत नाउ वी नीड टू लुक एट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर दोज हु हेल्प द बिल्डिंग डेटा सेंटर those who help building a data center like cooling those who help data centers की पूरी जो इलेक्ट्रिफिकेशन है डेटा सेंटर की जो रैक सिस्टम है जैसे जो सर्वर्स जहां रखते हैं मतलब देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व राइट सो राइट नाउ आई एम फिगरिंग आउट how many components are required to build a data centers, right? And which kind of service provider is needed to complete the whole data center project, right? So अभी मैं उस पर स्टडी कर रहा हूँ. Why? Because there will be a many opportunity in the second or third layer. Yeah. Then second is a financialization, right? This को बोलते हैं wealth management. That is a big trend that what I see. कि म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, then stock brokers हो गए, then those who are doing innovation around that, how you can save more money or how you can efficiently manage your money, right? By using the technology. That is the second trend, right? Third is electrification, but what happened? The electrification, a lot of companies are very overvalued, right? In AI also there is a lot of company overvalued. So आप जो भी ट्रेंडिंग सेक्टर होंगे आपको वहां बहुत सारी महंगी कंपनियां मिलेगी, बहुत सारी ओवरवैल्यूएशन होगी. तो वी नीड टू लुक deeper into as an investor that which are reasonably valued company and the good growth is available, right? Energy transition has mostly played out in a big manner, right? Like in a solar companies and all things, right? When you can look at insurance, I think insurance sector can grow a lot and they will make more money because in the COVID, they lost a lot of money. But after COVID, their premium has been a lot of increased. मतलब premium बहुत increase हो चुके हैं.
बट उनको जो लॉस होना था, अभी दूसरी बार कोविड आएगा तुरंत, वो जरूरी नहीं है, बट नाउ दे हैव हाइक द प्रीमियम, सो दे विल मेक लॉट ऑफ मनी नेक्स्ट फ्यू इयर्स, राइट? सो द इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर। देन सेमीकंडक्टर, बट इंडिया में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, राइट? सो you look it. Then one trend I forget to mention, BSI. So जो भी इंडस्ट्रीज में BSI गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली अप्लाई करती है, वहां पे देखोगे जो मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, कि जैसे BSI अभी रिसेंटली, अभी मुझे लगता है कि फुटवेयर में अब गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने वाली है। तो दोज हु हैव एक्स्ट्रा कैपेसिटी, आई एम ऑल्सो स्टडिंग दोज हु हैव एक्स्ट्रा कैपेसिटी, राइट, टू मैन्युफैक्चर, लुक एट दैट कंपनीज। जो चाइना से माल आता था वो बंद हो जाएगा, सो BSI के लिए लोकल कंपनीज के साथ मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, राइट? सो द पॉइंट, what I'm trying to say is that we need to look at the big trend, broad trend, right? So let me let me tell you, how you can make so much big money when you find the trend, right? So let me explain you. Last year, one of the trends we catch and we able to make a lot of money for everybody, right? For us, for Niftymillionaire community, for the people, those who invested in that money, in that stocks, right? So let me explain you few things, right? So let me give you the examples. We are now taking a case study, right? So I was looking at one interview of Elon Musk. So in that interview, ये क्लिप है, वो इंटरव्यू का पार्ट है। लेट मी डू, मेरे को ऑडियो भी शेयर करना पड़ेगा, लेट मी डू इट अगेन। Where things are headed from the standpoint of AI is that we have a silicon shortage now that will transition to a voltage transformer shortage in about a year. Ironically, transformers for transformers. You need transformers to run transformers. Somebody has a sense of humor in this thing. I think, yes. Oh, man. Fate loves irony. Ironic humor. And an ironically funny outcome seems to be often what fate wants. Humor is all you need. I think spice is all you need, somebody posted. Yeah. But yeah, so we have a silicon shortage today. A voltage step down transformer shortage probably in about a year, and then just electricity shortages in general in about 2 years. I gave a speech for the sort of world gathering of utility companies, electricity companies. And I said, look, you really need to prepare for a tripling of electricity demand, because all transport is going to go electric, with the ironic exception of rockets, and heating will also go electric. So energy usage right now is roughly 1/3, for very rough terms, 1/3 electricity, 1/3 transport, 1/3 heating. And so in order for everything to go sustainable, to go electric, you need to triple electricity output. So I encourage the utilities to build more power plants and also to probably have, well, not probably, they should definitely buy more batteries, because the grid currently is sized for real-time load, which is kind of crazy, because that means you got to size for whatever the peak electricity demand is, like the worst second or the worst day of the year, or you can have a brownout or a blackout. And we had that crazy blackout for several days in Austin. So because there's almost no buffering of energy in the grid. Like if you've got a hydro power plant, you can buffer energy, but otherwise it's all real time. So with batteries, you can produce energy at night and use it during the day, so you can buffer. So I expect that there will be very heavy usage of batteries in the future, because the peak to trough ratio for power plants is
anywhere from 2 to 5. So it's like lowest point to highest point. So like batteries necessary to balance it out. So जब मैंने ये इंटरव्यू देखा एलन मस्क का, उसके बाद ये क्लिप्स आई वो इंटरव्यूज कंप्लीट होने के बाद, राइट? तो आई एम शोइंग यू क्लिप्स. सो इट वाज अ होल पॉडकास्ट, राइट? So when I heard, so then I went to the companies, like, is it happening in India, right? So let's go. I figure out companies and then I started. Let me show you the con call. Okay, let me open this. And so April ka con call, I started reading, right? What the situation in India. So let me highlight few points, right? The company received the highest ever order inflow during the year. Can you guys read it? So जो ट्रेंड एलॉन मस्क बात कर रहे थे कि वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मर की शॉर्टेज हो है एंड वी नीड ट्रांसफॉर्मर टू रिन ट्रांसफॉर्मर्स, राइट? सो हैव यू गॉट एनी क्लू in India by reading this? Let me ask you, all of you. मैं आप सब लोगों को पूछ रहा हूं. I'm asking all of you. Then company has total inquiries of 17,000 crore plus under negotiation various stages, including overseas inquiries. These include all business segment, renewables, green energy transformer, power transformers, furnace transformers. And we navigated through phase of stabilization, turnaround and growth successfully. अगर आप ये लाइन पढ़ेंगे ना, तो कंपनी ने क्या किया? सबसे पहले फेज में स्टेबलाइज हुए, फिर टर्न अराउंड किया. नाउ दे आर ऑन द ग्रोथ पाथ, राइट? We are now taking a next step for the next console expansion and profitable. We have taken several conscious steps, right? We are entering the financial year 2025 with growth-oriented mindset to contribute to Indian government vision for develop India. The major pillar are capacity expansion, being more export focused, become fully backward integrated, explore revenues, right? Bob, let me. I was reading this company in April, right? So let's come to the April. Yeah, somewhere, right? I studied this company. I started studying. I think मुझे याद है 70-60 रुपीज के अराउंड प्राइस था. स्टडी किया एंड जब स्टडी कंप्लीट किया तब तक आई थिंक स्टॉक 100 के ऊपर चला गया, राइट? सो यहां से कंप्लीट करते करते स्टॉक आप देखो 60% अप हो गया. देन व्हाट हैपेंड? Let me here open that. We hereby happy to inform you that the company has received a withdrawal stop day letter April from Gujarat Energy Transmission. 1 minute, sorry. July में एक लेटर आया था. Let me open that. Yeah, ये साल का है. Okay, I need to find out. So what happened? In between, Gatco जो उनका one of the biggest client था कि we will stop working with the Gatco. Okay.
सॉरी, गेटको ने बोला कि हम ट्रिल को बैन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इश्यू। तो स्टॉक क्या हुआ? लेट मी टेक यू टू दैट डे। सडनली स्टॉक वेंट डाउन 20%, सर्किट लग गया। उसके बाद दूसरे दिन भी ऑलमोस्ट मेरे अकॉर्डिंगली 10% और डाउन हुआ। सो बेसिकली इन 2 days स्टॉक वेंट डाउन 28%। देन आई स्टार्टेड रीडिंग दैट गेटको ऑर्डर। सो बेसिकली अब आप देखो जो वाई आई बॉट, एक ट्रेंड था। व्हाट वाज अ ट्रेंड ग्लोबली, नॉट इंडिया? इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द all electricity demand. Second thing, if you want to expand your energy, there is a, if you need transformer. What you need? आप कहीं पे भी आप छोटा फैक्ट्री लगाओ, आपको यहां से बिजली को कहीं और ट्रांसफर करना है, यू नीड ट्रांसफॉर्मर, राइट? देयर आर ट्रांसफॉर्मर, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, राइट? सो यू, विदाउट ट्रांसफॉर्मर यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन एनर्जी। तो सोलर एनर्जी को कहीं से कहीं ट्रांसफर करना, यू नीड ट्रांसफॉर्मर। आपको विंड एनर्जी को कहीं से कहीं ट्रांसफर करना, यू नीड ट्रांसफॉर्मर। आपको आपके प्लांट से लोगों के घर तक बिजली पहुंचाना, यू नीड ट्रांसफॉर्मर्स, राइट? सो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स इज द कोर ऑफ एनर्जी, राइट? यू नीड ट्रांसफॉर्मर्स एवरीवेयर। सो 1 minute, 2023, right? Sorry. So what happened? Let me go through the dates. So ये कौन कॉल हुआ, and I was waiting for this कौन कॉल, right? कहीं मुझे याद है यहाँ पे था और ये कौन कॉल हुआ था ये दिन, ये रिजल्ट का दिन था 11 अगस्त, और ये कौन कॉल भी आई थिंक 11 अगस्त को हुआ था, राइट? सो मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि जो मैं समझ रहा हूँ वो ऑर्डर के बाद, इज इट अ ट्रू? सो व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दैट ऑर्डर कि ट्रिल के साथ पर्टिकुलर ऑर्डर गेटको ने बंद कर दिया है, गेटको ने पूरा ऑर्डर ट्रिल के साथ बंद नहीं किया है। सो उसका मतलब हुआ कि ट्रिल हैज नॉट डन एनी फ्रॉड, इट्स अ टेक्निकल इश्यू। टेक्निकल इश्यू कैन बी सॉल्व। अगर आपको आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया है तो आप उसके साथ पूरा काम बंद करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे कि यू विल स्टॉप वन वर्क और दूसरा सब काम शुरू कर रखेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? If somebody has done fraud to you, will you work with him or will you stop full work? आप एक काम बंद करेंगे या सब बंद कर देंगे? सो गेटको ने वैसा नहीं किया। गेटको ने बोला कि हम ये पर्टिकुलर जो ऑर्डर है ट्रांसफॉर्मर का, उसमें ही ट्रिल के साथ काम बंद कर रहे हैं, दूसरे सब काम शुरू रहेंगे। दूसरी चीज, मैंने रीड्स करना स्टार्ट किया तो आई रियलाइज कि पूरे दुनिया में नहीं, इंडिया में भी ट्रांसफॉर्मर की शॉर्टेज है। इफ यू पुट अ न्यू ऑर्डर विद अ ट्रांसफॉर्मर कंपनी एट दैट टाइम, ट्रांसफॉर्मर कंपनी आपको मिनिमम 16 to 20 month का वेटिंग पीरियड था। उसका मतलब ये हुआ कि ट्रिल वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मर मेकर इन गुजरात एंड मे बी इन ऑल ओवर इंडिया, राइट? सो गेटको को अगर उसकी जो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं वो लोग एनर्जी में, जो उनकी एनर्जी डिमांड को, उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है ट्रिल के साथ काम नहीं करने में। अगर ट्रिल मना कर देगा कि मेरे को आपके साथ काम नहीं करना है, तो गेटको विल कम टू द ट्रिल कि भाई तुम मेरे ऑर्डर लो, मेरा काम करो, राइट? सो दैट वाज द सिचुएशन एट द ग्राउंड लेवल। अगर यही सिचुएशन उल्टा होती कि ट्रांसफॉर्मर की डिमांड ही नहीं होती और गेटको ऐसा करता, तो गेटको के पास ट्रिल को जाना पड़ता और बोलता प्लीज सर हमें काम दे दो, राइट? सो इट वाज अ डिफरेंट सिचुएशन आफ्टर ऑलमोस्ट 15 years इन ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्रीज कि ट्रांसफॉर्मर कंपनीज वर ऑन द डोमिनेंट साइड, कि वो लोग डिसाइड करेंगे किसको ऑर्डर देना है किसको नहीं देना, राइट? सो देन आई अंडरस्टूड कि नाउ दिस इज अ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम एंड इट कैन बी सॉल्व। अगर गेटको पूरा भी काम बंद कर देगा सो कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज स्टील के पास अभी कैपेसिटी नहीं है जितना उसके पास काम है, राइट? सो देन द सेम थिंग आई वांटेड टू लर्न फ्रॉम
कि प्रमोटर क्या बोल रहा है. सो लेट्स सी. सो प्रमोटर ने पहले यहाँ पे पूरा जर्नी बताया कि उन्होंने ट्रेल कैसे शुरू किया है एंड ऑल राइट. The consolidated revenue was 153 crore. The decline by 48% from 297 crore. उसका रीजन क्या हुआ? गैटको ने उनका पेमेंट स्टॉप कर दिया. Quarter 1 is usually weak quarter as a majority of projects and complete take place in the last quarter of the. There was a significant build-up of inventory. Material was ready for dispatch, but delivery got delayed due to non-receipt of dispatch instruction from the customers. Hence, we were unable to invoice this order. So ये रेवेन्यू डाउन होने का दूसरा रीजन था. उस दिन भी स्टॉक आप देखेंगे, स्टॉक वेंट डाउन, राइट. मैं यस्टरडे क्लोजिंग पे करता हूं और यहाँ पे 17% डाउन खुला हुआ है बिकॉज रिजल्ट वॉज वीक. 33 करोड़ का प्रॉफिट सीधा 4 करोड़ हो गया और -15 करोड़ लॉस हो गया. कंपनी वेंट फ्रॉम प्रॉफिट टू लॉस. इन फ्यू इंस्टेंसेस ऑर्डर कुड नॉट बी डिस्पैच. अब यहाँ पे रीजन बता दिया कि भाई जो ऑर्डर रेडी थे हम डिस्पैच नहीं कर पाए क्योंकि उसका क्यूसी नहीं हुआ. Some of the orders were deliberately slowed down in the company where they were delayed payments by the customers. So कंपनी ने भी ऑर्डर्स डिले कर लिए. क्यों? क्योंकि कस्टमर ने पेमेंट डिले किया. During the quarters, we have not received any amount from Getco, which increased outstanding 183 crore, which impacted heavily on the deliverables of the. So कंपनी का वर्किंग कैपिटल पूरा स्टक हो गया. Then all this booked all the revenue. ये सब रीजन है जिसकी वजह से डाउन हुआ. अब मैं आपको बताता हूं क्या ये रीजन परमानेंट था. सबसे पहला रीजन वी आर अनेबल टू इनवॉइस. तो ये नेक्स्ट क्वार्टर में होना है, राइट. डिलेड क्यों हुआ? नॉन रिसीव क्योंकि इंस्ट्रक्शन कस्टमर की तरफ से नहीं आया. क्यों? तो उसको भी सेकंड ऑर्डर मैंने समझने की है कि कस्टमर ने क्यों डिलीवरी नहीं लिया. तो जब उनका ईपीसी का काम शुरू होता है, जो भी कस्टमर ने जहां पे भी जैसे कोई सोलर कंपनी ने सोलर प्लांट बनाया है या कोई विंड पावर बनाया है, तो वहां पे काम चल रहा है तो ट्रांसफॉर्मर वो लोग रख के क्या करेंगे. So that's why they delayed for maybe 1 week, 2 weeks. So that is a short-term problem. Then inspection customer का नहीं हुआ, right? So that is also short-term problem. तो ये क्वार्टर में हो जाएगा. Some of the orders were deliberately slowed down by the company. So that is a good. Company does not want to delayed payment. Company want payment now, right? या जल्दी पेमेंट चाहिए था तो कंपनी ने डेलिबरेटली डिले कर दिया कि अगर आपको ट्रांसफॉर्मर चाहिए तो गिव अस अ पेमेंट. सो ये कब करती है कस्टमर कंपनियां? कैन यू टेल मी? डेलिबरेटली कंपनी आपको माल देना स्टॉक स्लो कर दे, क्यों करेगी? और उसकी क्या पोजीशन होगी तो वो कर पाएगी? अगर आप सोचो कि डिमांड नहीं है बाजार में, इफ डिमांड इज सो डाउन, कैन कंपनी कैन डू इट? आप बताओ. एंड देन गेटको जो इश्यू था. सो ये सब चीजों से एक चीज पता चल गया है कि जो भी प्रॉब्लम की वजह से रिजल्ट खराब आया है, दे आर ऑल शॉर्ट टर्म बाय नेचर. दे आर नॉट अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम. नाउ गेटको की मैटर. सो जो मैंने समझा था ब्लैकलिस्ट मतलब पूरा काम बंद करने का, दैट इज नॉट ट्रू. मैंने गेटको का ऑर्डर पढ़ा, प्रमोटर ने भी यहां पे फिर से क्लैरिफाई किया. लेट मी डिस्कस इन द डिटेल गेटको मैटर. July 13 in this year, Getco issued stop deal notice to the company intimating that it has decided to stop dealing with the company for the period of 3 years on the ground that company had illegally submitted forged material dispatch clearance certificate to 20 transformers supplied by the company under ongoing contract for supply 29 transformer and 1 reactor to Getco. So as per the purchase policy of the parent company Getco, if stop deal order issued to any supplier, same will be applicable to new business opportunity where the tender is not awarded. Purchase policy of GU Vinil clearly mentioned it does not have an impact. It does not have any impact on existing contract or contract which is awarded to supplier and delivery has started under the same, nor it will have any impact on outstanding receivables. Can you all guys understand what I'm trying to say? जो उसके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट दूसरे थे, जो ऑर्डर्स थे, उसमें कोई भी डिलेड नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है. दे ऑल विल बी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन. And in case of the company, payment has been delayed because the transformer that are said to be supplied under the wrong documents are to be retested.
कि जो एजम्पशन लगाया है कि भी रॉन्ग डॉक्यूमेंट, तो वो रीटेस्ट किया जाएगा. रीटेस्ट ऑफ एज ट्रांसफॉर्मर हैज बीन डन सक्सेसफुली. मतलब जो उनको डाउट था वो क्लियर हो गया. द ट्रांसफॉर्मर जो बोला था वैसे ही है. द सेम हैज बीन डिस्पैच अंडर द फ्रेश डिलीवरी इंस्ट्रक्शन गिवन बाय गेटको. The balance transformer are already commissioned and are in operational and good condition. The company expects the payment process to start by end of August 2023, early September 2000. तो जो भी पेमेंट्स स्टक है वो सब आ जाएंगे. And company is representing its case to Getco and has reconsidered the stop deal and revoked the same. Management is hopeful to get revoked in the near future, right? So that is a one part. So ये चीज क्लियर हो गया कि जो गेटको का प्रॉब्लम है वो शॉर्ट टर्म बाय नेचर है एंड इट इज अ टेक्निकल इश्यू rather than financial fraud or any kind of fraud, right? Moral fraud. So going forward, I am very optimistic with the growth potential globally. The demand of transformer increase multi-fold, many folds. Major buyers such as Europe, USA are in a short supply by 2-3 years. Big opportunities coming in Ukraine for Indian companies like Trill, who has a potential meeting immediate demand of the country. For transmitting energy from solar park to grid, higher rated power transfer required by Trill as a necessary facility and all things, right? Then we see a lot of demand coming from railways with higher rollout of fast speed trains. Metro Trill has an advantage position in contributing the demand. Then आगे प्रमोटर ने बोला कि वी आर लुकिंग एट द गोल्डन पीरियड व्हाट वी हैव लुक एट द 2008 पीरियड, राइट? सो आई स्टडीड ऑल द so one Elon Musk interview, then I read it the promoter, then I read it transformer related lot of articles. So I come to know there is a big trend into transformers. So after this result, somewhere I think I started buying here. सो मैंने स्टडी यहां पे करना शुरू किया था, बाइंग यहां पे किया. ऑलमोस्ट 60% है, राइट? देन यू सी, कैन यू सी द ट्रेंड इन प्राइस? देन द बैड न्यूज, मार्केट है डिस्काउंटेड वेरी फास्ट. मार्केट कुड नॉट वेट. कितना दिन हुआ? 10 दिन, 14 दिन, राइट? अगर ये इतना ही खराब न्यूज होता तो वाई स्टॉक हैज क्रॉस्ड 94, then why cross stock 108? Are you all understanding? So एक था इंडस्ट्रीज ट्रेंड में थी, राइट? हाँ, दूसरी चीज, ट्रिल के पास ऑलरेडी कैपेसिटी पड़ा था जो भी डिमांड आया उसको कैप्चर करने के लिए. अगर आप सोचो कि कोई इंडस्ट्री में डिमांड आ जाए और आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो विल यू गेट बेनिफिट? विल यू गेट बेनिफिट? नो. सो मैंने दूसरी ट्रांसफॉर्मर कंपनीज भी देखा था, बट मोस्टली कुछ कंपनियां 80% कैपेसिटी पे चल रही थी, कोई 90% कैपेसिटी पे चल रही थी. तो वहां पे अगर नए भी ऑर्डर आ गए तो उनके अर्निंग में कोई बड़ा चेंज नहीं आने वाला था. बट ट्रिल के पास बहुत बड़ा कैपेसिटी पड़ा था इफ द डिमांड इज देयर, राइट? फिर पर्टिकुलरली स्टॉक भी ट्रेंड में था, राइट? इंडस्ट्रीज ट्रेंड में था, स्टॉक ट्रेंड में था, एंड मार्केट वाज आल्सो इन ट्रेंड. या तो आप देख सकते हो यहां तक, राइट? लेट्स गो टू, हम रिवर्स जाते हैं. सो स्टडी करते करते ये बैच बीच में खराब न्यूज भी आ गया, राइट? देन ये अर्निंग का रिजल्ट आया. इतने खराब रिजल्ट में भी स्टॉक नीचे जाने को तैयार नहीं था. सो व्हाट इज मार्केट इज गिविंग यू फीडबैक टिल नाउ? यहां तक आपको मार्केट ने क्या फीडबैक दिया? खराब न्यूज आया, स्टॉक गिरा बट टिका नहीं. उसके बाद आपने कौन कॉल पढ़ा, उसके बाद आपको पता चला कैपेसिटी बहुत है, डिमांड बहुत है उसके सामने. रिजल्ट खराब आया, स्टॉक गिरा बट टिका नहीं, तुरंत ही बाइंग आ गया. सो ये मार्केट आपको क्या मैसेज दे रहा है? व्हाट इज अ ट्रेंड ऑफ स्टॉक? आप सोचो, नीचे से स्टॉक ऑलरेडी 3 गुना हो चुका है एंड उसके बाद वी आर टेकिंग एंट्री.
If you look at the broad, you're buying at all-time high. SPS. This was a high of 2008, 95, right? And then we bought. How many people are still holding? And very honestly, batana. Very honestly, please share. How many people are holding? क्या आपके पोर्टफोलियो को गेम चेंजर बनाया उसने? So let's see what happened after that. So अब नेक्स्ट क्वार्टर का वेट करना था, राइट? सो नेक्स्ट क्वार्टर आता है, उसके बाद 257 करोड़, सीधा 20 करोड़ प्लस 3 करोड़. देन उसके बाद 369 करोड़, 21 करोड़ प्रॉफिट. देन यू से 370 करोड़, then 500 crore, 56 crore profit. Then 322 crore, 42 crore profit, right? You compare June versus June, right? Last year 156 crore, next year 322 crore. 4 crore profit, 42 crore profit, 28 net crore. Then this quarter, last quarter, 462 crore, 4257 crore, 69 crore profit, 64 crore, 46 crore, right? And whole year's number, काफी साल का टोटल प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे, उससे ज्यादा प्रॉफिट है लास्ट ट्रेलिंग 4 क्वार्टर्स का. या एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? See, why company able to increase the profit 6%, 9%, 10%, 13%. And if you look at the last quarter, ऑपरेटिंग मार्जिन इज 15%. ये कब होता है? जब ऑपरेटिंग मार्जिन कब इंक्रीज होता है? तो जो थीसिस से हमने लिया था, वो थीसिस क्या थी कि ग्लोबली ट्रांसफॉर्मर की डिमांड जबरदस्त है, शॉर्टेज है. इफ देयर इज अ शॉर्टेज, देन मैन्युफैक्चरर हैज द कंट्रोल ऑफ प्राइसिंग. If you don't have a control over pricing, it means demand is not there, right? So every quarter to quarter, we kept watching. इफ यू लुक एट, आप यहाँ पे देखो, आप पर्सपेक्टिव बिल्ड करने की कोशिश करो अपनी आंखों में, तो आपको क्या लगेगा? ये बहुत बढ़ गया है यहाँ पे. एम आई राइट? लगेगा या नहीं लगेगा? यहाँ पे बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आप जब लेंगे तब यही चार्ट है ना, आपको आगे का तो पता नहीं है ना. एम आई राइट और रॉन्ग? वेयर वी शुड फोकस, बहुत बढ़ गया है या यहां से बढ़ने की पॉसिबिलिटी है? वेयर वी शुड फोकस? मैं आप सब लोगों को पूछ रहा हूं, कहां फोकस करना चाहिए? बहुत बढ़ गया है या क्या पोटेंशियल है आगे? और एक चीज समझ लो, कोई भी स्टॉक अगर काफी साल के बाद, कितने साल है? 2008 और 2023, कितने साल के बाद स्टॉक वापस आ रहा है? 15 साल. Then what happened? See, stock went up 164, then रेस्ट किया 200 पे, फिर वहां से गया 400. 400 से नीचे में कितना ड्रॉडाउन आया देखो आप?
31% डाउन फ्रॉम द टॉप, देन वहां से कंसोलिडेशन किया, देन 300 वाला स्टॉक चला गया 770, राइट, फिर वहां से नीचे अगेन 28-30% ड्रॉ डाउन, राइट, फिर वहां पे टाइम स्पेंड किया, सी अगेन ब्रेकआउट किया, नीचे आ गया स्टॉक, सी अगेन फ्रॉम द टॉप जो आपने देखा वहां से 28% डाउन, राइट, so where you started your journey here, so वो पॉइंट आपको पहले क्या लग रहा था, बहुत हाई है, राइट, अभी क्या लग रहा है वो पॉइंट इनसाइड में, इफ यू गो बैक टू द जहां पे आपने खरीदा था, अभी क्या लग रहा है वो पॉइंट, यार कितना सस्ता था, राइट, कितना नीचे मिल रहा था, सी द पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, बिकॉज अब हम पास्ट देख रहे हैं, सो व्हेन यू लुक इनटू द करंट, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगेगा यार ये बहुत बढ़ गया है, बहुत महंगा है, बट यू विल मेक मोस्ट ऑफ द मनी इन महंगा एंड बहुत बढ़ गया है, राइट, 800% एग्जैक्टली इन ऑलमोस्ट 1 year and few months, right? So this is how I bought Trill. So क्या सीखने को मिला आपको? What you learn? क्या सीखने को मिला आपको ये जो केस स्टडी हमने किया? So एक you need a trend, you need a actual industries trend, then you need a stock has a trend, and you need a कि अगर वो डिमांड आई तो ये कंपनी के पास कैपेसिटी है या नहीं है, अगर कैपेसिटी है तो वो कितना कैपेसिटी है, राइट, when you connect the all dots, then you see that there is an opportunity that we should participate, right, and we can make money or not, right, and most importantly this industry is what a dead industries for many years. Anybody remember our SPS super performing perfect criteria? This was a perfect SPS stock, right, promoter holding high, dead industries, dead stock, hitting all-time high. कहीं भी नहीं चला, लास्ट बुल मार्केट छोड़ो, उसके पहले के बुल मार्केट में भी नहीं चला. Got it, guys? So let me show you another video. जो मैंने गलती किया, जो मैं मिस कर गया. Exactly 1 year पहले. Power there at the top. I think that's going to be a very undynamic economy. It's not so much. So, recession or no recession, though, one thing that's interesting, and you included, a lot of people are very encouraged by certain areas of the market, particularly the AI boom. There's always stuff to do. We had a hard landing in 74, 75 in chemicals and oils, and that stuff did great. I'm sorry, go ahead and answer your question. Well, do you think that all of AI makes it through this recession, or do you think that some areas of the market, particularly in AI, start to look like they're in bubble territory?
Well, all of AI is not going to make it through whether we have a recession or not, because they haven't separated the wheat from the chaff yet. But I do believe, unlike crypto, I think AI is real. It could be as transformative as the internet. It's a huge thing. And I think I've argued publicly that if staples can go up in price in a recession, why can't a company like NVIDIA, if their orders and earnings go up 70% in a hard landing, which is what I think would probably happen, it's not clear that NVIDIA goes down despite the lofty valuation level. History has proved if you have very good earnings in a recession and they're sustainable, if they're not, the market somehow तो जब मैं ये पढ़ रहा था, जब मैंने ये समझा, सो लेट मी एक्सप्लेन यू, राइट? सो जब मैंने इंडिया में देखा ये कंपनी, राइट, तो अपना निफ्टी मिलियनर का सर्वर भी यही कंपनी में चलता है, राइट? E2E। तो मैंने स्टडी किया, मैंने ये कंपनी को मैंने बोला कि अपना देखने के लिए चलो एक सर्वर ही लेते हैं इंडिया में, राइट? एंड लेट्स ट्राई टू लुक एट वो सर्वर को देखते हैं हम कि भाई सर्वर हम इंडिया में, अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा है आप लोगों को? ओके, किया, अभी दिख रहा है आपको? ओके, किया। सो मैं ये कंपनी को स्टडी कर रहा था एंड फिर मैंने ये कंपनी का सर्वर भी लिया, राइट? एंड इसका एक और भी इंटरव्यू था स्केलर पे, मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में कहीं भी दिखाया था। सो आई स्टार्टेड स्टडिंग दिस कंपनी और मैंने देखा कि अगर एआई की बूम आएगी तो सर्वर्स के भी बूम आएगी। एंड विच आर द सर्वर प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, दोज हु प्रोवाइड द सर्विसेज, राइट? सो ये कंपनी को मैंने स्टडी किया, बहुत डीपली स्टडी किया, बट क्या हुआ उसके बाद, समहाउ आई डिफोकस्ड, मेरा ये कंपनी से ध्यान चला गया, ये ट्रेंड से ध्यान चला गया। हुआ क्या इन बिटवीन इसमें, लेट मी शो यू दैट। यस, ये ब्लूम वेंचर बेसिकली ये वीसी थे। ब्लूम वेंचर आपने नाम सुना होगा, ये वन ऑफ द बिगेस्ट वीसी इन इंडिया। इन लोगों का स्टेक था, उन्होंने सीड फंडिंग किया था ये कंपनी को और आफ्टर आईपीओ दे वांटेड टू एग्जिट। सो उनका पूरा स्टेक आप देख सकते हो यहां पे, वो पूरा स्टेक उन्होंने बेच डाला। वो स्टेक बेचा उन्होंने पर्टिकुलर यहां पे, इफ यू ऑब्जर्व, यहां पे उन्होंने अपना स्टेक ट्रांसफर किया। एंड आई वाज स्टडीइंग दिस एआई एंड क्लाउड का पूरा बूम, बट समहाउ जो मैंने आपको बताया ना, अपना अटेंशन जो होता है ना, आई मिस्ड इट। कोई भी रीजन की वजह से मैं ये थीम मिस कर गया। बट व्हाट हैपेंड, इफ आई वुड हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस बूम, आई वुड हैव मेड क्रेजी मनी, राइट? मतलब विद इन 1 year दिस स्टॉक बिकम 16 to 15x। एंड बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे कहीं पे पैसा डाले अभी रिसेंटली, फंड रेजिंग, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आइडियाज आपको कहीं से भी मिलेंगे, कहां से भी आपको आइडियाज मिलते रहेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट यू नीड टू रीड, यू नीड टू वॉच, यू नीड टू ओपन योर जो लर्निंग और आपका जो
रीडिंग जो है ना उसको आपको बड़ा करना पड़ेगा. सो यू विल गेट आइडियाज फ्रॉम एनीवे. सो स्टैनली ड्रकन मिलर का मैंने इंटरव्यू देखा, फिर उसके बाद एलन मस्क के एआई पे देखे. देन आई लुक्ड एट global trend on how the cloud companies are expanding, right? How their business is expanding, right? US में मैंने AWS को पढ़ा. Then I read the liquid wave. Then I looked Rackspace. तो ये सब पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आया कि this is a global trend. एंड सर्वर्स की डिमांड जो अभी तक थी उससे बहुत गुना बढ़ने वाली है बिकॉज ऑफ एआई. एआई नीड लॉट ऑफ एंड लॉट ऑफ सर्वर्स, राइट? एआई नीड लॉट ऑफ पावर. सो ये सब चीजें बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू गेट सच काइंड ऑफ ट्रेंड once in a year, maybe two time a year, right? 1-2 साल में आपको एक बार मिलते हैं ऐसे ट्रेंड्स. And if you capture that opportunity, your portfolio can go to a next level, right? So let me tell you, in trail, I made one of the biggest money of my life. I made one of the biggest money of my life. And I can easily tell you, if I retire today, what I made money from the trail, I can live efficiently without compromising my lifestyle ever, right? So what I'm trying to say you is that few opportunities, you need few stocks in your life, few trends in your life. You don't need so many trends, so many things in your life. You need only few trends. And if you catch it very well, your life will change. Your life will change. I allocated very, very aggressively, right? When I got this trail opportunity, it was around 30 or 35% of my portfolio when I built a trail, 110 to 150. In 40 rupees, I deployed almost 30 to 35% of my portfolio in single stock. Yeah. So, ये मैं कैसे कर पाया? उसका एक ही रीजन है, go deep, understand what you are doing, and when you have the conviction, जितना conviction उतना पोजीशन होना चाहिए. आप एक चीज डायरी में लिख लो, जितना कन्विक्शन इतना पोजिशनिंग. मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ होता क्या है, सी दो मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइप के इन्वेस्टर हैं. वन, जिनका कोई स्टडी नहीं है बट दे हैव अ सुपर कन्विक्शन, राइट? सो आपको वो नहीं बनना है. दूसरे ऐसे लोग हैं जिनको कन्विक्शन आई है बट उनका पोजीशन देखोगे तो आपको लगेगा इसका कोई कन्विक्शन नहीं है एट अ पोर्टफोलियो लेवल. मतलब उनको कोई चीज समझ में आ गया कि यार ये चीज बहुत बड़ा बन सकता है, ये चीज में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बट जब उनकी एलोकेशन देखेंगे तो लगेगा यार उसको कोई जो कन्विक्शन उसके दिमाग में है और पोर्टफोलियो में दोनों उल्टा है. तीसरी कैटेगरी है जो लोग बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं स्टॉक मार्केट से. जब उनको कन्विक्शन हाई हो जाता है किसी चीज में, सो उनका पोजीशन साइजिंग भी हाई हो जाता है. And they create lot of wealth for themselves. So if you want to become a super successful investor, if you want to be a game changer, alpha, if you want to generate over the portfolio level, you need to build conviction. Without conviction, you will never able to allocate high. And if you never allocate high, you will never have a game changer years or game changing portfolio returns for yourself, right? How many people agree with me? So I already shared that how I built my conviction and what gave me the conviction. Do you all got it? How I understood the whole process, how I understood the whole trend, and then how I bet on it.
So what are the key learnings for all of you? So summarize in few sentences. What is the key learning? Anybody can, agar aap, I can allow you to unmute, right? Prasad is there. Prasad, can you do unmute because you are very good at summarizing? If Hello. Mayank is there, Hello. who will summarize, right? Am I audible? Yes, Prasad, can you turn on your video? Right now, I cannot. Okay, But so I do it. will summarize. Means I will tell what I understood from your Yeah. example. You have given your own example how you have identified a trend. To identify trend, we have to keep our mind open. We have to have access to various platforms, like you were looking at a podcast and there you got certain few minutes of a discussion, and then you analyzed it how it is relatable to our our Indian economy, and based on that you found a certain company and actual factual data you looked at to the till on call transcript. So I'm very much means this is like gold mine of knowledge for me, Okay. Okay. what you have shared in today's webinar. Okay. So how to Okay. look at, how to understand, describe, how to get the data from any information available, then apply it in our, we have our own skills, we have to apply it there and get the benefit from that. So I can tell you that the social platform and internet is so powerful. And the world's greatest thinkers are sharing their mind, sharing their vision with us freely. They are not taking any single penny. And if you can utilize that thing, right, that can help you long in long term, right? It's not that every interview will give you a stock ideas, yeah. Right, But right. But we have to have that habit. you have to develop the habit of learning, right? I did not go to the Stanley Druckenmiller or Elon Musk interview to find a stock idea, right? बिकॉज Right. क्या होता है, मैंने देखा है स्टॉक मार्केट के जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा ऐसी ही चीजें ढूंढते रहते हैं कि उनको कोई स्टॉक आइडिया मिल जाए. बट डोंट गो विथ दैट माइंडसेट, अदरवाइज योर अंडरस्टैंडिंग, योर विजन विल बी शैलो. को वो नजरिए से जाना है कि आई वांट टू लर्न व्हाट इज देयर विजन, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, एंड how they see the world going forward or how they see that industry is going forward, right? And when you listen to them, then try to process in your mind that what are your learning from that interview or podcast. Then you try to connect the dots. And once in a while, you get opportunity like Trill, E2E Network, and many more, right? Yes, we need only one or few such stocks. For that, we have to keep studying. True, true, true. Thank you, And Prashant. another Anything else you point want is to add? going big. You have explained it in many YouTube videos, many webinars, that we have to go big, and when we have conviction. To develop that Yes, without conviction, we need to conviction, prepare. nothing is going to happen. That's my biggest learning of life. Maybe you will make some money, maybe you make some returns, but it will never be a game changer. Yes. Yeah. Sabri sir, you want to summarize? If you can. Yes, sir. Thank you, Pratik bhai, for asking me to summarize.
As usual, you have shared a valuable nugget from your experience. And after we identified the probable stocks well, not stocks, probable sectors or megatrends that are appears to be in vogue for the next at least 1 year. Then we deep dived into drill and how people have made money, including me. Thank you very much. So in drill, there was a lot of news, good news and bad news, and how we need to be patient, investigate, and get our own conviction. Because we cannot live on borrowed convictions. We cannot live on convictions which is broadcasted to us. We have to build our own convictions. So after hearing that GETC has rejected trill for some blacklisted, literally blacklisted trill for some reason, then we have come to know only patient investors could hold on to this stock after a 30% fall. And we came to know that it's only a technicality. And they are back in the suppliers list in GETC and they are expecting more payments to be released. So transformers is a very big mega trend going forward. And Trill is now one of the biggest players in India today. And after 15 years of slumber, it has now woken up and just almost the entire transformer industry. So, which if you wish to spread your risk, you can select one or more transformer companies and also invest a portion, because going forward, as these are capital good investments, this is my theory only. Capital good investments, there will be such issues coming up frequently regarding quality or some other issues. So, while in the long run, it will do very well. If people want to spread their risk and if their exposure is very high, they can look at other transformer companies also. They want to ride the entire megatrend. Well, we identified megatrends in artificial intelligence also, as per that YouTube video by Stanley Druckenmiller. We need to identify, and I was just identifying a few stocks. And all the big guys are there in AI, including TCS, Infosys, Wipro, HCL, Tech Mahindra, and many companies and traders, investors are all using AI to make more money. You know, you'd be astonished at the way AI is helping the traders and investors in summarizing, encapsulating, and not giving exactly recommendations. Whatever you tend to miss out, you manage to get in. Like you manage to get information from ChatGPT. And I'm sure in the next few months going forward, you will have very specialized widgets just for investors and traders. Should learn to use them, don't blindly trust them, and get experience firsthand, and always use it wisely and well with proper risk management. Then there is a lot of money to be made in the next 1 year. Thank you, sir. There is a lot of money. I will correct your sentence. There is a lot of money to be made in next decade. Next decade. Okay. Right, that's right. Yeah. Thank you, sir. Thank you for summarizing. Yeah. So, I think that's what I wanted to highlight for the today's session, that look for the trends, and trends are everywhere around you. Trends are everywhere around you. Just try to open your eyes, try to listen, try to observe, and one or two trends can change your financial status if you have a high allocation, and that bet become the most successful bet of your life, right? So I would wish you that in next 1 year, you all will able to identify at least one trade, right? And able to bet accordingly.
Because finding a trend is a one thing and betting big on it is a second thing, right? So I wish you do both things, right? And if you do it successfully, then make sure you contribute towards society. There is a lot of unprivileged people, there is a lot of students, right? Make sure that you help them to study better, you help them to maybe enter into the institute where they can build their career, or maybe they can change their life, right? Because if we don't have a purpose of making money, then money will make you mad, right? पैसा आपको पागल बना देगा. And make sure that that does not happen to you. Because if that happens to you, then that is very dangerous, right? So make sure that whatever you do, you should have a purpose, right? And Sabri sir is one of the good inspiration that he is doing for the dogs, right? Street dogs and all things, right? He's doing a lot of things for them. So there are many people are maybe आप करते ही होंगे, but maybe हमें नहीं पता होगा, but I know about Sabri sir, right? I know about few people. So they know that why they are making money. And that is making them a very good or maybe good person by the heart, and maybe they are so much happy inside what they do, right? Because sometime over the some period, the money will not give you happiness. You'll realize it sooner or later. Money will become pro commodity, but what you do with the money, that will give you ultimate happiness, right? So make sure that till next 1 year, you'll be able to find one great trend across the globe or maybe India, and then you will able to participate, and then you will able to make money for yourself, right? So I wish you all a great time, and make sure that you utilize the great trend in front of you, and we will also do at Nifty Millionaire able to find a good or great trend, right? And able to participate in that trend and make money for ourselves and our investors, right? So thank you so much, and आप सब लोगों से again wish you all happy Diwali, and हम गुजराती लोगों के लिए न्यू ईयर भी होने वाला है कल. There is a happy new year, right? So wish you all a happy new year from all of us at the Nifty Millionaire, right? And thank you so much. And आप सब लोग आपका फीडबैक जरूर शेयर कीजिए how these all webinars and today's webinar is contributing to your mindset and your learning curve, right? If you can spare few minutes after this seminar, do it and share in the WhatsApp, or maybe you can share in Slack. What are your key learnings, right? So please do it. So thank you so much, and see you all again next time. Yeah, thank you.